राम 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 राम, जय श्री राम, सीताराम सीताराम। सभी लोग बने रहें, कमेंट करते रहें, लक्ष्मी की लाइव में जुड़ जाएं।
राम 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 सभी से।
थैंक यू, थैंक यू। मिश्रा जी, बहुत दिन के बाद एंट्री हुई है, बहुत दिनों के बाद। थैंक यू।
राम 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 राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राधे राधे। जो लोग बने हैं प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। मिश्रा जी अगर बनी हो तो कमेंट कर दीजिए। चली गई हो तो कोई बात नहीं।
थैंक यू पूनम बहन, स्वागत है, हार्दिक वंदन, अभिनंदन है, गुड मॉर्निंग।
थैंक यू सभी का, विजय भैया थैंक यू। आप तो चले गए होंगे, आते हो 1 सेकंड में 25 कमेंट करके भाग जाते हो, मुझे पता तो है, मुझे पता है मेरे भाई। आप आते हो 1 सेकंड में 25 कमेंट, आप फर फर करके निकल जाते हो। 2-3 ऐड अगर वॉच कर लिया करो तो भी अच्छी बात है। जब नहीं वॉच करते हो इसलिए सपोर्ट करने का किसी का मन नहीं करता। कम से कम 2 ऐड तो आदमी फुल वॉच कर ले, लेकिन नहीं। इसलिए मेरा मन टूटता चला जा रहा है। सबका सपोर्ट करो, सपोर्ट करो, सपोर्ट करो, कोई करते भी नहीं हैं अच्छे से। जय माता दी, जय माता दी पटेल जी, जय माता दी। थैंक यू, सभी का स्वागत है, वेलकम है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पटेल जी, गुड मॉर्निंग। कमेंट करते रहें पटेल जी। बहुत सुंदर गाना गया है, जो भाई बहन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, फुल वॉच करिएगा। बहुत अच्छा अच्छा गाना है। हमारे चैनल पे जाइए, सुनिए, फुल वॉच करिए, बहुत अच्छा लगेगा। जिस टाइप का आप गाना चाहेंगे हर प्रकार के गाने मिलेंगे। भक्ति, भजन, भाव, संध्या भजन, सोहर, नकटा, कहरवा, हर प्रकार के गाने मिलेंगे आप लोग को। कजरी गीत गया है, बहुत सुंदर सुंदर कजरी गीत है, बहुत प्यारा मनमोहक कजरी गीत है। आप लोग सुनिए, आनंद लीजिए गाने का। और जब फुल वॉच करेंगे तभी आप लोग को अच्छे से समझ में जब गाना आएगा तभी आनंद मिलेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, राधे राधे, राम राम। बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं हमारे चैनल पे, आप लोग जाइए, मनोरंजन करिए। बहुत प्यारा गाना है। जिस टाइप का आप लोग गाना चाहेंगे सर्च करके निकाल लीजिएगा। बहुत अच्छे अच्छे गाने पड़े हैं, बहुत सुंदर सुंदर गाने हैं। फुल वॉच करिएगा। भक्ति, भजन, संध्या भजन, सोहर, नकटा, कजरी की बहुत प्यारा प्यारा गया है, बहुत सुंदर सुंदर। देखिए मैं सामने आ रही हूँ, आप लोग के सामने आ रही हूँ। देखिए सामने आ गई। श्री राम, राधे राधे, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज मुझे टाइम है, आज मुझे टाइम है। अभी भोजन बनाना नहीं है, अब दोपहर में भोजन बनेगा। तब तक के लिए मैं बैठी हूँ सामने आप लोग के। आ जाओ,
हर हर महादेव पटेल जी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सुपर 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 सुपर। गुड 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 गुड। भोला हमार हो चरनिया से पापी तरे, शंभु हमार हो चरनिया से पापी तरे। कवन फूले फूले नहीं हरम, कवन हो ससुरवा फूले, हे हो सखिया कवन फूले फूले। गुरु चरनिया न शिष्या सब लोढ़े चले, हे हो सखिया कवन फूले फूले। गुरु चरनिया हो शिष्या सब लोढ़े चले। कवन फुलवा ससुरवा फूले, हे हो शिष्य कवन फुलवा। गुरु चरनिया हो लगवा लोढ़ने चले हो। कहाँ से आई है शीतला मैया, कहाँ से दुर्गा मैया हो, हे हो सखिया कहाँ से आई है काली मैया। भवनवा हमरा जगमग हुई है हो, हे हो सखिया कहाँ से आई है काली मैया हो। भवनवा हमरा जगमग हुई है हो, चौकिया से आई है शीतला मैया। विंध्याचल भवानी मैया, विंध्याचल भवानी मैया हो, हे हो सखिया कलकत्ता से आई है काली मैया। गनवा हमरा जगमग हुई है हो, हे हो सखिया कलकत्ता से आई है काली मैया। भवनवा हमरा जगमग हुई है हो। अरे मेरी रेखा बहन आ गई हैं, स्वागत है रेखा बहन, राम राम। और बताइए क्या हाल चाल है। थैंक यू थैंक यू। जाते समय मेरे वीडियो पे कमेंट छोड़ देना। मैं आपकी लाइव ढूंढी, मुझे मिला नहीं बहन, मुझे नहीं मिला।
जाते समय मेरे वीडियो पे कमेंट छोड़ देना और बताओ कैसी हो। बोलोगी नहीं? मेरी आवाज़ नहीं जा रही है आप तक? अरे कुछ तो बोलो। कुछ तो बोलिए मेरी बहन, कुछ तो बोलो। क्या हाल चाल है? लाइक बढ़ाओ। लाइक नहीं मिला आपका, आपका लाइक नहीं आया है। रेखा बहन, लाइक बढ़ा दो और जो है कुछ तो मुँह से बोलो, क्या हाल चाल है। काऊ खई है शीतला मैया, काऊ खई है दुर्गा मैया हो। हे हो सखिया काऊ खई है काली मैया, भवनवा हमरा जगमग हुई है हो। हे हो सखिया काऊ खई है काली मैया हो, भवनवा हमरा जगमग हुई है हो। ध्वजा पताका शीतला मैया गो, नारियल भागा मैया, नारियल दुर्गा मैया हो। सखिया उड़ी हेलुआ खई है काली मैया, भवनवा हमरा जगमग हुई है हो। हे हो सखिया पूड़ी हेलुआ खई है काली मैया हो, भवनवा हमरा जगमग हुई है हो। थैंक यू रेखा बहन। अरे कैसी हो, क्या कर रही हो? लाइक नहीं मिला है, लाइक कर दो, लाइक कर दो। कैसी हो, क्या कर रही हो? कुछ तो मुझ बोलो। थैंक यू रेखा बहन, थैंक यू। मेरी आवाज़ अगर आप सुन रही हो तो जवाब दो। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, लक्ष्मी माँ सो रही हूँ, तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, क्या हो गया तबीयत को? तबीयत को क्या हो गया, सो रही हो? मेरे पास चली आओ, तबीयत सही हो जाएगा। टहल घूम लोगी, मन फ्रेश हो जाएगा, तबीयत सही होगा। खूब मायके का दाना खाई हो ना, इसलिए तबीयत डाउन डाउन हो गया। और जब जाइएगा तो मेरे वीडियो पे कमेंट छोड़ देना, ताकि आपके लाइव में आना मुझे आसान रहे। मोबाइल जब से मैं अपडेट कर दी ना बहन, तब से मैं इतना इधर उधर सबकी आईडी हो गई कि इतने लोग को सब्सक्राइब की हूँ, कितने लोग को मैं कहाँ ढूंढूँ कैसे। तो जो भी बहुत दिन के बाद आते हैं तो बोलती हूँ कि अगर जैसे आप लोग वीडियो देखते रहें, हम भी देखते रहें, तो नोटिफिकेशन ऊपर रहता है। बारिश हो रहा था ना, धान लगा रहा था, भीग गई थी, बुखार आ गया। अरे तब ऐसा काम क्यों की? वो जो है कुछ पहन ली होती, जो पहनने वाला आता है, क्या रेनकोट पहन ली होती। अब बताइए, बुखार हो गया है इस समय, जिसको पकड़ रहा है सर्दी जुकाम बुखार ना, जल्दी छोड़ नहीं रहा है, जल्दी छोड़ ही नहीं रहा है। दवा नहीं ली? दवा ले लो। आप लाइक की हो,
पता नहीं क्यों लाइट नहीं आया है। तो कुछ चाय पानी हुआ कि नहीं? दवा ववा खा लो, चाय पानी करके दवा खा लो। तो भोजन कौन बना रहा है आज? रेनू को घर पर था, मैं तो खेत में थी ना। अच्छा, हाँ ये तो बात सही है। नहीं, जब जान रही हो मौसम ख़राब है, आषाढ़ महीना चल रहा है, बारिश का मौसम चल रहा है, तो कब बारिश होने लगे तो लेके जाना चाहिए था। लेकिन आदमी ये सोचता है धूप निकला है तो कहाँ बारिश होगा। तो भगवान को आते जाते देरी नहीं है कि भगवान कितनी जल्दी आ जाएंगे कितनी जल्दी चले जाएंगे। हमारे तरफ ना मौसम इतना तेज़ बन रहा है, लग रहा है अभी बारिश हो जाएगी, और लेकिन बारिश नहीं होती है। भगवान पता नहीं कहाँ चले जाते हैं खुद से। और बत्ती भी टिकती नहीं है, आती है जाती है, आती है जाती है, एकदम समझ लो क्या बताएं। लाइक कर दिए हैं, अच्छा अच्छा, लेकिन लाइक आया नहीं, पता नहीं क्यों। खेत में जा रही थी तो धूप बहुत था, फिर उसके बाद 2 घंटे बाद बारिश होने लगा। वही चीज़ तो मैं बोल रही हूँ, वही चीज़ कि कब भगवान आ जाए, भर 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 पानी बरसने लगे अचानक, और कब चले जाएं, धूप हो जाए कुछ कहने। सुबह जब मैं टहलने गई, इतना तेज़ धूप निकला, मतलब सूरज निकल रहे थे, लग रहा था कि बहुत दिन में धूप होगी, बहुत गर्मी पड़ेगी। लेकिन थोड़ी देर में इतना बादल छा गया, इतना बादल छा गया कि लग रहा था कितनी तेज़ बारिश होगी, और भगवान पता नहीं कहाँ चले गए। बारिश भी नहीं हुआ, ऐसे बादल छाए हैं, खुल जा रहे हैं, फिर आके छा जाते हैं, ऐसे मौसम हुआ है। देखिए, बारिश हो जाए तो अच्छी बात है। किसान की खेती इस समय सब लोग धान लगा रहे हैं अपने खेतों में, तो उन लोगों को प्रॉफिट हो जाए। अब तो पता नहीं क्या हो गया, कौन सा युग आ गया कल युग में, कि बारिश बहुत कम होती है, बहुत कम बारिश होती है। किसान समझ लीजिए बहुत परेशान हैं। एक तो अच्छे से बत्ती भी नहीं रहती है कि लाइट अच्छे से है, चलो खेत की सिंचाई कर लें, और नहर में पानी भी नहीं आते हैं। जिसका नहर के किनारे खेत है, वो नहर भी धोखा देता है। अब इंजन आदमी कितना चलाएगा, डीजल से कैसे इतना खेती कर पाएगा, कैसे सिंचाई उसकी होगी। तो समस्या तो है ही है। किसान इसीलिए पीछे हो जाते हैं बेचारे ना। कच्चा सौदा होता है उनका, खेती पैदा हो गया तो वाह वाह, नहीं पैदा हुआ तो बेचारे आंसू रोते हैं। नहीं आ रही है लक्ष्मी में, हाँ लाइट बिल्कुल सही नहीं आ रही है, लाइट बिल्कुल सही नहीं आ रही है, एकदम बहुत ख़राब बत्ती आती है। देखिए, सुबह से कटी थी, आई थोड़ी देर रही, 20 मिनट थी, और उसके बाद बत्ती चली गई। मशीन चल भी नहीं रहे, बहुत परेशान है किसान लोग, बहुत परेशान है किसान लोग। सबसे ज़्यादा परेशानी किसान ही व्यक्ति झेल रहे हैं, किसान ही लोग झेल रहे हैं भाई। धान में पानी भी ज़्यादा लगता है, अगर सिंचाई नहीं करेंगे तो वो सूख जाएगा। आज सींच के आओ, जिस तरीके से धूप होता है, तो हम समझती हैं कि आज सींच के आओ, कल ना सींचो तो परसों तो सींचना ही पड़ेगा। खेत एकदम सूख जाते हैं। तो बताइए कैसे आदमी कहाँ से कितना डीजल लाएगा, और कितना जो है सिंचाई करेगा डीजल से। और बिजली भी नहीं रहती है, बहुत कम रहती है। अब जिसके खेत दूर में हैं घर से उसके, तो वो कितनी बार खेत में जाएगा, चलिए अब लाइट आया है, चलें अब घर चलें, फिर आएँ फिर जाएँ, फिर आएँ फिर जाएँ, तो उसके लिए तो और समस्या है।
तो दवा ले लो, दवा खा लो, तबीयत ठीक हो जाए। तबीयत ठीक है। आप तब बहुत परिश्रम करती हैं बहन, आप बहुत परिश्रम करती हैं। खेत में भी आप काम कर लेती हैं, घर का भी काम करती हैं, फिर यूट्यूब से जुड़ी हैं, चैनल पे काम करती हैं। बहुत परिश्रम आपको पड़ता है, बहुत मेहनत पड़ता है। हम तो घर ही का काम करते करते थक जाती हैं, इसी में परेशान रहते हैं। बहुत परेशान हैं किसान लोग, बहुत परेशान हैं। हाँ, वही चीज़ तो बोल रही हूँ, किसान लोग बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान हैं। थैंक यू सपोर्टिंग मैसेज करने के लिए। तो दवा नहीं खाई, दवा नहीं खाई, कुछ नाश्ता पानी करके दवा खा लो ना, दवा खा लो। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। आज मुझे टाइम है, फेस लाइव पे बैठ गई, लाइव पे फेस बैठ गई। देखिए किसी ने कमेंट लाइक किया था, 6 लाइक हुआ था, अब जो है 5 हो गया। किसी ने लाइक करके अपना लाइक ले लिया। आज अभी भोजन नहीं बनाना है ना, अभी भोजन बनाना नहीं है, आज दोपहर में भोजन बनाऊँ। वैसे नहा धो के बनाती हूँ तो मुझे 12 बज जाते हैं। आज मैं समझ लो कि 12 बजे के बाद ही भोजन बनाऊँगी। आज रिक्वेस्ट बनाना है ना, तो पत्ता कहीं से आ रहा है, पत्ता कहीं से मंगवाई हूँ, तो अभी पत्ता आया नहीं है। जब आएगा उसका कटाई छटाई धुलाई सब होगा, तब उसके बाद बनाऊँगी। सुबह का नाश्ता हुआ है, सबका नाश्ता कर लिए हैं। अब दोपहर के बाद भोजन वही बनेगा, तब सब लोग खाएंगे अपना। अच्छा, 3 बजे से आपकी लाइव चलती है? हाँ आऊँगी, आऊँगी। हाँ हाँ, आ जाया करो, बिल्कुल आएंगे, ऐसी बात नहीं है, क्यों नहीं आएंगे, ज़रूर आएंगे। लेकिन वीडियो पे मेरे कमेंट छोड़ देना। आज जब जाना तो मेरे वीडियो पे कमेंट छोड़ देना, आएंगे, ज़रूर आएंगे 3 बजे। बाय बाय, बाय बाय। इतना समय दी, बहुत अच्छा लगा। हम बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाय बाय। हम आएंगे 3 बजे, लेकिन कमेंट छोड़ दो, किसी भी वीडियो पे कमेंट छोड़ दो। हम तो आपका वीडियो देखते रहते हैं, ब्लॉग कभी डालती हो, कभी गाने का डालती हो। वीडियो भी देखना ज़रूरी है, वीडियो जब हम लोग देखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे।
थैंक यू। शॉर्ट वीडियो पर मैंने कमेंट कर दिया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आ जाऊंगी, आ जाऊंगी। उमा धीरे धीरे, उमा धीरे धीरे पैर को दबाने लगी, पिया को जगाने लगी। उमा धीरे धीरे पैर को दबाने लगी, शंभु को जगाने लगी। उठो नाथ भाई भोर, दादुर करे बड़ा शोर। उठो नाथ भाई भोर, दादुर करे बड़ा शोर, दादुर करे बड़ा शोर। पेड़ों पे पंछी चहचहाने लगी, शंभु को जगाने लगी ना। पेड़ों पे पंछी चहचहाने लगी, शंभु को जगाने लगी ना। उमा धीरे धीरे, उमा धीरे धीरे पैर को दबाने लगी, पिया को जगाने लगी ना। जो लोग बने हैं प्लीज़ कमेंट करते रहें। आ गई बत्ती, आ गई बत्ती आते ही जैसे दिल में एकदम प्रफुल्लित हो जाते हैं। थैंक यू, थैंक यू। अगर आप सभी का कमेंट आएगा तभी तो पता चलेगा कौन से भैया बहनी कहाँ से आए हुए हैं, कहाँ से बने हुए हैं।
थैंक यू पूनम बहन, थैंक यू, स्वागत है, हार्दिक वंदन अभिनंदन है। अभी बैठी थी, फेस लाइव पे बैठी थी, लोग नहीं आ रहे थे तो फिर मैं अपना बैक कर दी। अगर बनी हो तो कमेंट करो, अगर बनी हो पूनम बहन तो कमेंट करो। अरे मेरी नटखट आ गई भाई, स्वागत है, हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है। देखिए सामने आ रही हूँ, क्या करूँ, कोई थे नहीं तो इसलिए मैं बैक कर दी कैमरा। आज मुझे टाइम था तो सोची थोड़ा फेस चला लूँ, तो लोग नहीं आ रहे थे तो फिर मैं बैक कर दी। और बताओ क्या हाल चाल है। देखिए सामने आ गई, सामने आ गई। हाँ लाइक मिल गई है लाइक मिल गई है। और बताओ क्या हाल चाल है। घर परिवार में सब लोग कैसे हैं। बेटा अब ठीक रहता है ना। कहाँ चली गई नटखट, दो कमेंट करके। और इसमें एक कमेंट करके, एक कमेंट करके कहाँ घुस गई। कल तो इसकी लाइव में, हाँ, इनकी लाइव में गए थे, एकदम से इतना काम में व्यस्त थी रेशमा, इतना काम में व्यस्त थी। अगर बनी हो तो बाहर आओ, कमेंट करो। चली गई तो फिर कोई बात नहीं। परमिला बहन मेरी आवाज़ सुन रही हो तो एक कमेंट करो, एक कमेंट करो। चली गई, एक कमेंट करके कहाँ छुप गई। लुका छुपी खेल रही हो क्या। थैंक यू, थैंक यू। क्या कर रही हो, कैसी हो, पूछ रही हूँ इतनी देर से। चाय ज़्यादा पी रही हो। रेडी हो रही हूँ, कहाँ जाना है। अच्छा अच्छा अच्छा, दवा के लिए, दवा के लिए घूमने टहलने। इतना तो बता दो, दवा के लिए जा रही हो तो घूमने टहलने जा रही हूँ। ठीक हो, ठीक है, आराम से तैयार हो जाओ, आराम से तैयार हो जाओ, ठीक है। लाइव में आ गई, वही बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा लाइव में आई।
जब जाइएगा तो बाय बाय कर देना, जब जाना तो बाय बाय कर देना, तब उसके बाद फिर लाइव बंद कर दूँगी, लाइव बंद कर दूँगी। देखिए इतना तेज बादल छाया, लग रहा था कितने जोर से बारिश होगी और धूप हो गया।
बाय बाय बहन, बाय बाय बाय। बाय 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 बाय।
थैंक यू सभी का स्वागत है, हार्दिक वंदन अभिनंदन है। लाइव में बने रहें, कमेंट करते रहें। जय श्री राम, जय श्री राम। राम राम, राम राम। जय हो, जय हो, जय हो।
राम 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 राम। जय श्री राम, जय श्री राम, राधे राधे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। थैंक यू। मेरे पंडित भैया का स्वागत हो गया है, हार्दिक वंदन अभिनंदन है लाइव में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लाइक बढ़ा दीजिए, मैं सामने आके आ रही हूँ। और बताइए क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है, कैसे हो, कैसी हो? ठीक हूँ, ठीक हूँ। आज यहीं अभी बैठी हूँ, आज यहीं बैठी हूँ ऐसे। देखिए अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी भोजन पानी भी नहीं बना रहे हैं। कैसे रखें, स्टैंड नहीं लिए हैं ना, इसीलिए दिक्कत है। स्टैंड नहीं लिए हैं। और बताइए आप कैसे हो, क्या हाल चाल है? आप कैसे हो, क्या हाल चाल है? आप अपना हाल चाल बताइए। लाइक को लाइक कर दीजिए, लाइक को लाइक कर दीजिए मेरे भैया। देखिए बैठे हैं। और बताओ क्या हाल चाल है? यूट्यूब पर फोटो कैसे लगाते हैं बता रही हूँ। जैसे साइड में ऐसे मेरी लाइव चल रही है, यही मेरी लाइव चल रही है। इस साइड में ऑप्शन नहीं रहता है, एक आवाज़ म्यूट करने का माइक रहता है, एक गोल सा कैमरा आगे पीछे कर दें, फिर चौकोर का ऐसे रहता है, उसमें पीछे से थोड़ा सा हल्का सा ऐसे डंडी बना रहता है। तो उसी पे जब टच कर दोगे ना तो आपकी डीपी लग जाएगी, आपकी डीपी लग जाएगी। समझ में आया हो तो बताइए, नहीं तो फिर से समझाएं। यहीं ऐसे आज बैठी हूँ, कुछ कर नहीं रही हूँ, आज कुछ काम नहीं कर रही हूँ। झाड़ू लग गया, नहाना पूजा पाठ सब हो गया, मंदिर गई थी, मंदिर से भी आ गई। भोजन अभी सीखूँगा, बताऊँगा। अच्छा अच्छा, वही वही जैसे साइड में जब लाइव चलने लगती है, जब लाइव चालू हो जाए, चाहे वो जो है स्क्रीन वाली हो, चाहे वो जो है ये साधारण नॉर्मल हो, चाहे ऐड वाली लाइव हो, सब में साइड में, इसी साइड में, यहीं पर बगल में ऐसे रहेगा। एक कैमरा बैक करना होता हो, एक माइक रहता है, एक और चौकोर रहता है, पीछे हल्की सी ऐसे चौकोर सी डंडी लगी रहती है, उसी पे आप क्लिक कर दीजिएगा। देखिए हम उसी पर क्लिक कर रहे हैं। देखिए फटाक से मेरी डीपी लग गई, मेरी डीपी लग गई। हल्का समझ में आया है, लेकिन सीख लूँगा। हाँ हाँ, बस वही वही। फिर उसी पे जिस डीपी को आप टिप किए हो, उसी डीपी पे, मतलब उसी ऑप्शन पे ऐसे फिर टिप कर दीजिए, उसी पे फिर आप सामने आ, जैसे मैं देखिए आपके सामने आ गई। अच्छा, फ़ोटो जो लगाते हैं, जो मैं लगाई हूँ जब लाइव में आप मेरे आए, जो फ़ोटो लगा है, वो उसकी बात आप कर रहे हैं। अब मुझे समझ में आया, आपका तो डीपी लगी रहती है, उसको लगाने के लिए अब हम बता दें आपको। जैसे हम लाइव चालू किए हैं, लाइव जब हमारा चालू हो गया, करते समय जैसे हम कमेंट लिखें, जैसे यहाँ से हम जो हमें लिखना रहता है यहाँ से लिखें, फिर उसके बाद हम अगर पब्लिक नहीं है पब्लिक किए, फिर उसके बाद हम वो लगाते हैं, मतलब जैसे प्रचार वो आता होता है वो सब लगा देते हैं। तो यहीं पर ऐसे पेंसिल रहेगा, इसी पे एकदम उसी पेंसिल को आप ऐसे टच करेंगे तो नीचे दो ऑप्शन आएगा,
तो ऊपर वाला छोड़ दीजिएगा, नीचे वाले पे टच करेंगे तो गैलरी में जितने आपके फ़ोटो रहेंगे, चाहे भगवान का, चाहे आपका, चाहे जो जो भी आप गैलरी में सेव करके रखेंगे, सब फ़ोटो आ जाएगा स्क्रीन पे। तो उसमें से जिसको आपको लगाना होगा, जो लगाना होगा, उसी पे ऐसे टच कर देना, उसी फ़ोटो पे टच कर देना, वो आपके यहाँ आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा, उसका छोटा करने के सिस्टम में ऐसे कर देना तो छोटा हो जाएगा। फिर उसको यहाँ ले जाके सेट कर देना, फिर आपका लग गया, आपका मतलब वो फ़ोटो लग गया। आ गया समझ में? जैसे भगवान का लगाओ ना और किसी का लगाओ। अगर आ गया हो समझ में तो बताइए। ओके सर। अरे हम सर नहीं है भैया, आपकी छोटी बहन हूँ, आपकी छोटी बहन हूँ। बहुत आसान है, बहुत आसान है लगाना, बहुत आसान है। तो गैलरी में जो फ़ोटो रहेगा वही आप लगा सकते हैं, जो गैलरी में रहेगा वही लगा पाएंगे। तो पहले से सर्च करके रख लेना जो आपको लगाना रहेगा। भगवान का लगाना हो, माता जी का लगाना हो ना, आप अपना खुद का लगाओ। हाँ, इस फ़ोटो पर बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो बता दी दोनों, तो बता तो दी। समझ में आया कि नहीं? जैसे आप लाइव जब चालू करते हैं तो लिखने का पेंसिल नीचे रहता है, और जो है वहाँ डीपी लगाने का पेंसिल, जो आपको फ़ोटो स्क्रीन पे लगाना है, चाहे मतलब थंबनेल बना के लगा दो, चाहे जो भी, तो यहाँ पर पेंसिल जो रहेगा, यहाँ यहाँ कोने में स्क्रीन पर, यहाँ ऊपर, तो ये उसको टच करेंगे तो दो ऑप्शन आएगा, दो ऑप्शन यहाँ नीचे आएगा, यहाँ नीचे। तो उस पर आप जब टच करेंगे तो आपकी गैलरी खुल जाएगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मेरे भैया, ओम नमः। तो जब गैलरी खुल जाएगी तो उसमें से जो डीपी आपको लगाना रहेगा उसको आप उसी पे टच कर दीजिएगा, वो फटाक से लग जाएगा। उसके बाद ऊपर सेव रहेगा। हाँ देखिए, मैं भी भूल गई। तो यहाँ पर सेव का निशान देगा, यहाँ पर सेव करना रहेगा कोने में, तो उस पर टच कर दीजिएगा, सेव हो जाएगा, मतलब तब लग जाएगा। कोशिश करूँगा, सीखूँगा। ठीक है, जब नहीं आएगा तो फिर सेव ज़रूर कर देना। जैसे जब यहाँ आप अपना फ़ोटो लगा दिए, तो अगर यहाँ सेव नहीं करेंगे, यहीं पर सेव का निशान रहेगा, सेव पे टच कर दीजिएगा, तभी वो लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा, वो कैंसिल हो जाएगा फिर। और चाय नाश्ता हुआ आपका? चाय नाश्ता हुआ? माता जी के सामने मेरी अर्जी नहीं लगा रहे, वो मुझे पता है, मेरी अर्जी नहीं लग रही है। माता जी के सामने अर्जी लगाइए मेरे भाई। लाइक अगर ना किए हों भैया तो लाइक प्लीज़ कर दीजिए, अगर किए हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि कभी कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम से भी लाइक नहीं मिलती। मुझे भी नहीं आता था, मुझे भी नहीं आता था, तो किसी ने ऐसे लाइव में किसी के गई थी तो पूछी, तो बताई, तो मेरे समझ में आया। कहाँ चले गए आप, कहाँ चले गए? और बताइए, चाय नाश्ता हुआ, क्या हाल चाल है? क्या खाए? नमक रोटी? नमक रोटी में बड़ा स्वाद रहता है भैया।
प्रेम के भूखे श्री भगवान सुनो, जरा धर के ध्यान सुनो। जब भगवान प्रेम के भूखे हैं केवल, वो जो है साग विदुर के घर खाए थे, तो हम लोग इंसान हैं तो नमक रोटी अगर मिल जाए, कोई प्रेम से खिला दे, तो समझ लो कि बहुत बहुत ऊपर उसका शुक्रिया अदा करो। और लग रहा है आप चले गए। चाय नाश्ता हो गया है? अच्छा अच्छा अच्छा, चाय नाश्ता हो गया। क्या खाए हो? सुबह से आप क्या खाए हैं? आपके बच्चों का अच्छा न्यूज़ जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे भैया, बहुत बढ़िया। उन्हीं लोग का टेंशन रहता है, उतना मैं सेहत से परेशान रहती हूँ, मुझे उसका टेंशन नहीं रहता है। जितना मैं अपने सेहत से दुखी रहती हूँ, उतना टेंशन नहीं है जितना बच्चों का। वो लोग सेट हो जाएं। लाइक कर दिया हूँ भैया जी। अच्छा अच्छा, उतना मुझे नहीं टेंशन रहता, उन्हीं लोग का टेंशन रहता है। बस कहीं सेट हो जाएं, जो पेपर हुआ है इसमें भी पास हो जाए, आगे भी वैकेंसी आ जाए, उसमें हो जाए ये लोग। और टेट का एग्ज़ाम दिए हैं ना, टेट का एग्ज़ाम था। देखिए सुपर टेट कब देंगे। हो जाए भैया ये सब, पास हो जाए, नौकरी पा जाए, मेरा जीवन धन हो जाएगा। इस समय इतना खर्च पड़ रहा है, इतना खर्चा आ रहा है कि क्या बताएं। इन लोगों का बाहर का समझ लीजिए खर्च थामना बहुत कठिन है। और जो है कारखाने पे 2 बच्चे रहते हैं, उन लोगों का भी वेतन रहता है, नाश्ता पानी रहता है, सब बहुत खर्च है। बहुत परिश्रम करते हैं हमारे पतिदेव। उनके साथ साथ मैं भी करती हूँ, घर का सारा काम मैं करती हूँ भैया। चाहे मैं कितनों बीमार रहती हूँ, लेकिन मुझे घर का सारा काम करना पड़ता है, सारा काम करती हूँ। झाड़ू पोछा, खाना पीना, जो लोग मेहमान लोग आते जाते हैं उनकी आओ भगत सेवा, और कपड़े की धुलाई तो सबसे कठिन रहती है। बिस्तर तो हफ्ते में मैं एक बार बदलती हूँ, क्योंकि छोटा बच्चा कोई है नहीं, तो चादर रहता है, तकिए का कवर रहता है। उसी में कहीं आना जाना पड़ गया, शादी ब्याह, दुख बीमारी, तो भी संभालना पड़ता है, देखना पड़ता है। बस बच्चे सेट हो जाएं, मेरा जीवन समझ लो धन्य है। मुझे टेंशन से एकदम समझ लो फ्री हो जाऊंगी। कल तो इतना मन में उलझन था, इतना सारा दिन उलझन था, बेचैनी थी कि जैसे कहीं कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था, कहीं कुछ एकदम बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। रात में तब फिर पता नहीं कब नींद उड़ आई, जब सो गई सुबह उठी तब फिर टहलने गई, वहाँ से आई नहा धो के झाड़ू उड़ू लगा के, तब फिर घर में दिया बाती करके मंदिर गई, वहाँ से तब फिर आई। चाय नाश्ता हुआ, उसके बाद से मैं कुछ काम नहीं कर रही हूँ। आप चले गए, मैं बक बक कर रही हूँ। आप चले गए, मैं बक बक कर रही हूँ। लाइव पे बैठ गई, 1-2 लोग आई, बातें की थोड़ा, वो लोग चली गई, तो ऐसे में बैठी थी तो आपकी एंट्री हुई, आप भी चले गए। ओ राकेश भैया, अगर आप चले गए हों तो कोई बात नहीं, अगर बने हों तो कमेंट करिए ताकि पता चले कि आप बने हैं। वेरी गुड, हाँ वेरी गुड वर्मा जी, पटेल जी।
राकेश भाई अगर बने हो तो कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए, नहीं तो फिर लाइव बंद करने जा रही हूँ। जेह दिन आई है मोर सजनवा भागे पौबना गली, हे पौबना गली, हो पौबना गली, जेह दिन आई है मोर सजनवा भागे पौबना गली। राकेश भैया अगर बने हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, कमेंट करिए, नहीं तो फिर लाइव बंद कर दें। राम 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 राम। दिन आई है मोर सजनवा भागे पौबना गली। दर्शन करने कैसे जाए तनि बतावा गोरिया, हे बतावा गोरिया, हे बतावा गोरिया, दर्शन कर कैसे जाई तनि बतावा गोरिया। ये उस समय का गाना है, मेरे चैनल पे गया है, बहुत अच्छा गाना है। जब सती माता श्री रामचंद्र जी का परीक्षा लेने जा रही थी कि देखिए हम सीता का रूप बना के जा रहे हैं, भगवान हमें पहचान पाएंगे कि नहीं, तो वही जो है जब गई तो भगवान पहचान गए। वो माता जी का मतलब मन स्मरण किए और उसके बाद माता जी से प्रणाम किए। माता जी लज्जित हो गई, फिर अपने धाम आ गई। तो वही भोलेनाथ तो सब लीला जान ही रहे थे। तो जब भोलेनाथ से बताने, भोलेनाथ पूछे क्या हुआ, वहाँ आप गई थी सीता का रूप बना के, तो क्या हुआ, तो वही वो बताई कि मुझे पहचान गए, हरि विष्णु का अवतार था रामचंद्र जी का ना, तो वो बोली कि मुझे पहचान गए प्रभु जी। तो वही शंकर जी ने कहा कि अब उनका दर्शन हम कैसे करने जाएंगे, मुझे लज्जा आ रही, शर्म आ रही। तो वही है गाना, उसी पे बना है। दर्शन करने कैसे जाई तनि बतावा गोरिया, हे बतावा गोरिया, हो बतावा गोरिया, दर्शन कर कैसे जाई तनि बतावा गोरिया।